I'm Janhavi Panwar. Welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, welcome to my YouTube channel. And in today's video, I'm going to teach you how to improve your English pronunciation. Well, the recent video I posted was regarding how to improve your English much faster, how to speak English. And if you haven't watched the video yet, do go and watch it if you have to improve your English. Otherwise, if you have to improve your pronunciation, you're in the right place. So let's get started. So tip number 1 to improve your English pronunciation is notice how your mouth moves. Now, what you have to do is stand in front of a mirror, and after standing in front of that mirror, उसमें आपको देखना है कि आप अपने words को कैसे pronounce कर रहे हो. आप शीशे के सामने खड़े हो, आपने अगर ओ बोला तो आप देखो आपके lips कैसे move कर रहे हैं. Because the way you move your mouth affects the way you're pronouncing any word or any language you are trying to speak or any language's pronunciation you're trying to improve. तो आप उसमें notice करो कि आपके words कैसे change हो रहे हैं. तो ये कैसे करना है? Now, if you have watched any movie, आपने कोई ऐसे movie देखी, English की देखी और normal Indian accent में देखी, तो उन movies को देखने के बाद after like standing in front of a mirror and just look at yourself, अब आपने नोटिस किया कि मूवी में उन लोगों ने ओ को प्रोनाउंस किया ऐसे ओ और आप बोल रहे हो ओ. So there's kind of like a sky to earth difference. That's what we say, right? So O and O. So you have to notice that thing, these little things, that how do they pronounce their word. और इनको करने के लिए आपको शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा और देखना होगा कि आप अपने words को कैसे pronounce कर रहे हो. उसके बाद आपको देखना है कि उन्होंने मूवी में या फिर कोई आपने स्पीच सुनी हो या फिर कोई आपने शो देखा हो तो उस शो में उन words को कैसे pronounce कर रहे थे and how are you pronouncing it. So you have to notice all of these little things and that can improve your English pronunciation. Next tip, practice with tongue twisters. Yes, there are so many tongue twisters out there. Tongue twisters are sort of like a poem, but they are hard to pronounce. Why? Because there are so many vowel sounds in those. So like जब हम छोटे थे हम ऐसे tongue twisters बोल कर भी देखते थे. She sells seashells on the seashore. I did it. Nice. Okay, so this is what you have to do. तो आपको ये tongue twisters के साथ जो है practice करनी होगी. आप एक दिन में कम से कम 10-11 tongue twisters बोलो. Practice again and again. Have you ever noticed how pronunciation actually affects the language, the conversation you're having with a person? लोग आपको आगे से बोलते हैं pardon me, what did you just say? आपने क्या कहा? तो ऐसे आपको बोलते हैं. Why? Doesn't matter if your vocabulary is perfect, doesn't matter if your English grammar is perfect, but the only point is if the other person can understand you really well, that means you have a nice pronunciation and you have a nice English. Otherwise, it really doesn't matter if the other person can't understand you. तो आपको अपनी pronunciation ऐसी करनी होगी कि आगे जो आपकी जो इंसान है वो आपकी बात को समझ पाए. तो आप tongue twisters के साथ practice करो. आप Google पे जाओ and notice tongue twisters to improve your pronunciation या फिर tongue twisters, normal tongue twisters, और उनके साथ जो है प्रैक्टिस करो. उन्हें बार बार बोल कर देखो और इसके लिए आपको किसी वीडियो की भी ज़रूरत नहीं होगी, किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं होगी. The only thing is that you have to notice how you're pronouncing those tongue twisters. Another thing is, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हमें ज़्यादातर दिक्कत कहाँ होती है? मैं जो ज़्यादातर नोटिस करती हूँ ये होता है कि हम लोग स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं. हालांकि जो मेरी छोटी सिस्टर है सानवी, उसके नाम को काफ़ी सारे लोग सानवी को शानवी बना देते हैं. And that's that's not really good. I mean, you're changing someone else's name, so that's not really fine. It feels like it. I mean, I certainly feel that way. So you have to look at your pronunciation. या फिर हमें दिक्कत होती है जब हम T और TH वाली sound को pronounce कर रहे होते हैं, the. So that type of sounds. So this is what you have to do. Practice with tongue twisters. They really, really help you in pronouncing all of these little words and where your tongue stuck in the middle. और ऐसा होता है कि हमसे ये word बोले नहीं जा रहे हैं, हम बार बार इनको जैसे उल्टे words में बोल रहे हैं. So these tongue twisters can help you improving your pronunciation a lot. Tip number 3. Okay, tip number 3 is break down your words in small sounds.
So yes, break down your words. अब हमारे पास एक काफ़ी बड़ा सा ऐसे वर्ड होता है और फिर हम उसको ऐसे पूरे को बोलने को ऐसे पूरे को बोलते हैं एक ही बारे में, पर वो हमसे बोला नहीं जाता. सो द पॉइंट इज़ कि आपको जो है सिलेबल्स के अकॉर्डिंग उस वर्ड को तोड़ लेना है अलग अलग साउंड्स में. सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स होते हैं वेन एवर यू हैव लाइक डिफरेंट साउंड्स इन अ वर्ड. उसके लिए आप क्या करो मैं बताती हूँ. Place your like hand, your palm, or at the front of your hand under your chin, और जब भी आपकी chin जो है वो इस hand को touch करेगी मतलब वो एक syllable है. So syllable have like these different sounds, like the word syllable, syllable, it has 3 syllable sounds. So syllable, and the y sound. So there are like 3 syllable sounds. So what you have to do is you have to break these sounds in इस word को ऐसे sounds में break कर देना है और फिर बोलना है अलग अलग से. ऐसे कोई काफ़ी बड़ा word होता है उसको बीच बीच में से आप ऐसे break करो and try to pronounce it then. Otherwise जब हम पूरा sentence बोलते हैं तो हम अपने जो letters होते हैं उनको mix up कर देते हैं. R की जगह A हो जाता है या फिर T की जगह R हो जाता है, like this. So don't mess up. What you have to do is break those words in small little sounds. So break down your vowels, and after that is stress your words, stress your vowels, exaggerate your sound, and this is tip number 4. So what you have to do, आपको अपने साउंड्स को exaggerate करना पड़ेगा. आपने कभी नोटिस किया है कि आप जब भी स्टेज पर होते हैं so people tend to like really yell and stress their words more and more, ताकि जो ऑडियंस आपके सामने बैठी है if there are like 20 to 30 people, ये आपकी जो इंटरव्यू वाली स्किल्स होती हैं या फिर आपकी जो स्टेज पब्लिक स्पीकिंग वाली स्किल्स होती हैं वो भी इम्प्रूव करेगा. So आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स पे स्ट्रेस देना होगा बहुत सारा, मतलब सारे वर्ड्स पे नहीं, पर जैसे कोई वॉवल हो गया, क्योंकि हमें वॉवल्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. So the vowel sounds, you have to stress them, you have to exaggerate them more. How I learned like accent and how I improved my pronunciation was from this exaggeration. मैं आज भी नोटिस करती हूँ मेरे पुराने वीडियोस पे काफ़ी कमेंट आते हैं she's exaggerating the sound, because at that time I was still in like the learning process. So exaggerate your sounds more. आपको वॉवल्स पे स्ट्रेस देना होगा ताकि आप सामने वाली ऑडियंस के लिए नॉर्मल हो. अदरवाइज हम एक ही ऐसे टोन में इंटोनेशन में ऐसे बोलते रहते हैं कि हमें ऐसा लगता है एक लेसन पढ़ दिया उसमें. बट अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्जेशन स्किल्स एंड योर प्रोनाउंसिएशन. सो यू हैव टू स्ट्रेस द वर्ड्स ताकि अगला बंदा आपको समझ सके. सो exaggerate your sound more. Tip number 5, improve your tone and your intonation. Intonation क्या होती है? जब हम एक वर्ड को ऐसे बीच में किसी वर्ड को हम उठाते हैं, कोई साउंड हमारी ऐसे नीचे जाती है, हम बोलते टाइम एक हम चिल्ला के बोलते हैं और एक हम ऐसे आराम से बोलते हैं. So that is what your intonation and your tone is. तो आप उस पर ध्यान दो. आप जैसे कोई मूवी देखते हो या फिर आप कोई शो देखते हो, कोई सीरीज़ देखते हो, तो उस पर देखो वो कौन से वर्ड को ऐसे उठा के बोलते हैं, कौन से वर्ड को ऐसे नीचे करते हैं, या फिर वर्ड्स में जोन से लेटर पे वो स्ट्रेस ज़्यादा डालते हैं, इंटोनेशन ज़्यादा करते हैं. सो नोटिस दैट थिंग्स, नोटिस दोस थिंग्स. और आप भी उसी तरीके से अपनी इंटोनेशन को ऐसे एक टोन में नहीं पढ़ते जाना है. Mohan was a child, Mohan did this, and that's how we do it. Don't do that. All right, Mohan was a child. He did this. He played football. Like the words we're stressing, जहाँ पे हमारी इंटोनेशन से ऊपर जानी चाहिए. ऐसा भी नहीं Mohan was a child, he did this. नहीं, वो पूरा ऐसे ऊपर इंटोनेशन में भी नहीं और पूरा ऐसे भी नहीं कि आप पूरा आराम से बोलो. So notice those words that whatever the important words are, जिस पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस की ज़रूरत है कि अगले बंदे को ये ज़्यादा समझ में आना चाहिए, तो वहाँ पे आप अपनी थोड़ा पिच हाई कर सकते हैं, इंटोनेशन हाई कर सकते हैं, and that can help you a lot. So these were 5 tips, and fortunately I remembered that this was 5 tips. I didn't lose the counts. And so yeah, work on these and your English pronunciation would improve like in a very less time. I can't be really certain about the time right now, but in a really less time. So improve your English pronunciation really well. Thank you so much for watching this video, and if you liked it, do subscribe, and besides that subscribe, there is this what do we call that? Ringing bell. So do press that ringing bell and do share it with your friends and family. Do comment. Constructive criticism is always welcome. Thank you so much for watching my video. Bye everyone.